ठीक है, आप ओके अपने पीयूष, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हम लोग कम बोलेंगे पीयूष, कुछ पूछना होगा तो चैट से ही पूछ लेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। सो आई एम ओके, स्टार्टिंग। बाकी जो चैट पे नाम देख रहा होगा उसी नाम से आप स्टार्ट करना, है ना? चलो, ओके ओके। So, is it the light or is it the eyes that enables you to see the things? Let's try this again. So in spite of having eyes, we are not able to see each other. Eyes होते हुए भी आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। कारण इसका क्या है? आपकी आंखें खराब है? No, your eyes are perfectly fine. But in the absence of light, we cannot see this beautiful world around us. So light is an energy which enables us to see the beautiful world around us. It's because of the light that we can see each other. You can see me just because the light is falling on me, and you can see me in a duplicacy also. Let's try again. आप मेरा duplicate भी देख सकते हैं. I have a twin brother which is called as Ayush Pandey. Hi Ayush, how are you? Hi, how are you? Why you are seeing my face over there? Why it is possible that you can see my face over there? And why a duplicate of mine is appearing over there? The question comes that why this is all happening? ये ऐसा सब क्यों हो रहा है कि हम लोग क्यों एक आपको मेरा चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है और मेरे ही जैसा कोई एक और इंसान वहां दिखाई दे रहा है? Why this is happening? The answer comes from light. We can see each other just and just because of the presence of light. जब light किसी surface पे पड़ता है, then there are three things which can happen. Reflection, which is happening right now. आप मुझे देख पा रहे हैं just and just because of light is falling on my face and it is going into your eyes. So if the light is coming on my face and it is going into your eyes, then this phenomenon is called as reflection. Let's understand this technical word again. इसको एक बार फिर से समझते हैं. जो डेफिनेशन है साइंस का वो ये कहता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है और पड़ने के बाद वो उसी मीडियम में वापस आ जाता है जिससे वो गया था. लेट्स सी दिस इन स्लो मोशन. जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है और पड़ने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाता है, then that is called as reflection of light. Okay, I would like to involve my students also. So Jia, can you hear me? Yes, sir. What is there in between light and me? Which medium is there? Okay, let me make a question more clear. Where's my mobile? Yeah. Let me show a horror picture to you all. This is light and this is me. What is in between us? Is it air? Is it water? Is it vacuum? What is in between us? Please answer. It's air. Completely correct. So light is coming from the medium which is air, and again it is going into a medium which is also again air. So when light strikes a surface and returns back into the same transparent medium from which it has came, then that is called as reflection of light. So this was the air medium, it struck a surface and went back into the medium. यानी कि लाइट जिस मीडियम से आया था वो उसी मीडियम में टकराने के बाद वापस चला गया. अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है. लेट्स सी अगेन. Is it transparent? Yes, sir. Okay. So right now, the light is traveling in air, but let's make this light travel in water also. Can it travel through the water and come to you? क्या ये पानी से travel कर पा रहा है? ये पानी के उस पार जा पा रहा है? Okay, let's do. Yes, sir. ये देखिए लाइट, ये रखा बीच में मैंने पानी.
क्या आपको मेरे चेहरे पे लाइट दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Is it traveling in water also? Yes, sir. सो भाई यहां से ये तो प्रूव हो गया कि लाइट सिर्फ एयर में ट्रैवल कर सकता है, वो दूसरे मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वो फेनोमेनन एक दूसरा फेनोमेनन है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देयर आर सम मोर फेनोमेनन्स व्हिच वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस, बट फॉर द लेवल ऑफ क्लास 8 and 9 we have to understand that what is light. So light is a form of energy which enables us to see the beautiful world around us, and we can see the objects only and only जब लाइट उस सरफेस पे पड़े. अगर लाइट पड़ेगा ही नहीं तो सब कुछ गायब. तो अब आते हैं लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज पे. क्या लाइट फास्ट है या स्लो है? क्या लगता है आप लोगों को? What you all think? My two little students. So light is very fast. It has a speed of 3 lakh kilometer per second. It can travel a distance of 3 lakh kilometer per second. एक घंटे में 3 लाख किलोमीटर. यहां से बस दिल्ली जो है वो 1100 किलोमीटर है. तो you have to multiply it so many times to have a small idea of what actual distance light cover in 1 second. Pause the recording, please. Sir, just pause the recording, please. Just pause the recording. Okay, sir. Sir, just a minute correction as far. So light is very fast. But now the second question comes, that light travels in a straight line or it travels in a curved line. So I don't have, just a minute. Okay. I have to run around to gather my teaching aids. So I have a teaching aid, which is this rod, and this is a hollow cylinder. Is it straight or is it curved? Sir, straight. Are you sure? Can I bend it? Am I strong enough to bend it? No, I'm not strong enough to bend it. No, मैं इसको बेंड कर सकता हूँ, मैं तो नहीं बेंड कर सकता हूँ. आप जैसे बच्चे अगर कॉम्प्लान पीते होंगे तो फिर they can bend it. Okay. So let's see whether a light travels in a straight line or curved line. This is straight. When the pipe is coming exactly straight, then only you are able to see it. Yes or no? Yes, sir. So light cannot travel in a curved path. ये इससे बाहर निकल करके मुड़ नहीं पा रहा है. It can only travel in a straight line. Okay. Okay, sir. Now let's understand some technical rules about the light. ये तो हमने समझा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जो हम लोग अभी और समझेंगे. बट उसके लिए हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे, और उन टर्म्स को पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं. पहले मैं लिखता हूं, फिर मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दोस टर्म्स, देन यू कैन आस्क मी. ओके, लेट्स ट्राई. The first is incident ray. The second is reflected ray. Then there is a word normal. And normal is not a ray. This is just a line. Okay. So the first question comes, what is incident ray? Incident ray, first of all, before understanding the word incident ray, we have to understand the word, what is the meaning of the word ray. In maths, we have a different definition for ray, but in physics, the ray is determined as path of light. Ray is determined as path of light. For example, the pipe experiment, which I have, the pipe example, which I have taken, उसमें उस पाइप के थ्रू जब लाइट जा रहा था तो वो था पाथ ऑफ लाइट एग्जाम, वो पाथ ऑफ लाइट का एग्जांपल था. अगर मैं सपोज कि मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स नहीं है, अगर आपने कभी देखा होगा लेजर लाइट देखा होगा, और अगर आप लेजर लाइट ले करके अगर इस टॉर्च में, इस पानी में, अगर आप उस लेजर लाइट का अगर लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं, फॉर लाइक एग्जांपल लाइक दिस,
क्योंकि ये तो एक बड़ा सोर्स है, अगर कोई पॉइंट सोर्स होता तो वो पाथ ऑफ लाइट आपको दिख रहा होगा। मैं यहां से भी आपको रे दिखाने की कोशिश कर सकता हूं, आपको ढेर सारे रेज ऑफ लाइट दिखाई दे रहे होंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहे हैं। कैन यू ऑल सी द डिफरेंट रेज ऑफ लाइट? Yes, sir. Those rays are actually the path of light. So basically the path of light, light के आने का रास्ता, light के जाने का रास्ता, ये कहलाता है ray of light, the path which the light is following. Let's draw a world class diagram. Let's say this is the torch. Please don't laugh on my diagrammatic skills, students. And we have got a ray of light. So since this is the path of light, which is the light which the light is following, so this will be called as ray of light. Now there are two types of ray. This one is coming from the source of the light, and this is going back after striking the surface. So this is the coming ray and this is the going ray. Right now, the light which is falling on this whiteboard or on my surface. Oh, Ankita complimented me for the diagram. Thank you, Ankita. Okay. So right now, the light which is coming on my face will be coming ray or going ray. Please answer, my students. So since the ray is coming on my face, it is incident on my face. So that's why this ray is called as incident ray. This ray is called as incident ray. Is it clear, everyone? Please, Yes, sir. if anyone has any doubt regarding this, then please ask me. Okay, let's move forward. Now, the light after striking the surface is going back into the air as it was coming on my face, and it is again going back to the camera, laptop camera. So this will be called as reflected ray, क्योंकि यहाँ पे reflection हो चुका है, ये आया, ये टकराया और ये आगे गया. Let's see one video which will explain more about this, and I will pause that video and then we will study about the laws of reflection. कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको लॉज, जिनको लाइट फॉलो करती है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Sorry for the lagging of the laptop, but I am, wait. So here we go with the video. Please let me know if the audio is, or if the sound is audible to you all or not. अगर आपको sound ना सुनाई दे, तो please let me know. Why the video is not getting played? Is it audible, students? Yes, sir. Okay.
So this is the activity which we used to do in our childhood also. How did he manage to reflect light at the desired point? Though light can behave in mysterious ways. Okay, students, tell me, the red rays which are coming towards the mirror are which rays? Incident rays or reflected Incident. rays? Incident rays, that's very good. And the mirror is producing or bouncing back which rays? Reflected rays. Very good. So can you see the reflection happening in that video? Yes, sir. Okay, very good. Let's go ahead. It still obeys certain laws. An expert pool player can estimate the point at which the ball must strike the edge so that it hits the target ball. Now see, if you can see the path of the light, path of the white ball, it has went to the one surface, it is going from there and it strike the surface and it returned back, striking the other black ball in other surface. So what this shorter line is indicating, which ray? Incident ray. Very good. And this longer line followed by the black ball? Reflected ray. Reflected ray. Very good. So let's come back and we will go again into the video. Okay. So we have understood that a light goes, this is the incident ray and this is the reflected ray. अब मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अगर एक प्लेन मिरर के सामने आप या आपका कोई फ्रेंड अगर खड़ा हो और अगर आप वहां पे उस प्लेन मिरर में उस फ्रेंड को देख पा रहे हैं तो क्या वो फ्रेंड भी आपको देख पा रहा है? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने? यस सर. और अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो अभी करते हैं. अब मैं कैमरे के सामने से हट जाता हूं लेकिन फिर भी आप मुझे देख पाएंगे और आप लोग अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगा. So I request two of the students to switch on their camera. Yes, Gaurangwan has switched on and Jia has also switched on. So I am going away from the camera, but still we will see each other. Let's see how. Can you see me? Yes sir. Or should I do like John Cena that you can't see me and you can see me? Okay. So let's go ahead. So this was happening because I was at मैं एक ऐसे एंगल पे खड़ा था जहां पे मैं मिरर पे देख रहा था तो मुझे आप लोग दिखाई दे रहे थे और आप लोग मिरर पे उसी एंगल से देख रहे थे तो मैं आपको दिखाई दे रहा था. तो इससे समझ में क्या आता है? लेट्स सी दैट. सपोज कीजिए कि यहाँ पे वो मिरर था और मिरर में हम लोग रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस का जो सिंबल होता है वो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं. This symbol means reflecting surface or polished surface. It is polished by silver, so in order to make it smooth. Now, if the object is there and the light is coming from here, the light is coming from the object and ये यहाँ जा रहा है, तो ये जैसे ही यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो this ray is called as incident ray and this ray is called as reflected ray. पता है इस surface को क्या कहते हैं? This surface is called as surface of reflection or point of, जिस point को हम लोग बोलते हैं, इस point को बोलते हैं point of reflection और इस surface को surface of reflection बोलते हैं. This surface is called as surface of reflection. इस surface पे reflection हो रहा है और मैं आपको बताऊं कि हर surface reflection कर रहा है, तभी आप उस surface को देख पा रहे हैं. आप मुझे देख पा रहे हैं because my face is reflecting the light and you can see this surface, you can see this is also reflecting the light and there are so many other things. Each and every object reflects light apart from transparent objects. So is it till now यहाँ तक सबको clear है या किसी को कोई doubt भी है तो पूछिए. Sir, I am clear. Okay. बड़े शांत बच्चे हैं, टीचर को तंग नहीं करते हैं. चलिए अच्छे बच्चे हैं. Okay. So this is incident ray, this is reflected ray.
जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक किया उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट पे और इस सरफेस के साथ हम एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे। ये रहा वो सरफेस और ये रहा वो पॉइंट। Okay, so this line is called as normal. Normal means here, ये normal नहीं है। ये normal कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि it is lying on the surface normally in the term language of physics it can be called as lying perpendicularly, यानी कि ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कुछ इस तरह का। surface line 90 degree. Can you see this is normal? Yes or no? Yes, sir. But now is it normal? Not at all, sir. Okay, good. Chaliye. So now comes the first technical term, angle of incidence and angle of reflection. तो अब हम लोग समझते हैं कि angle of incidence क्या होता है और angle of reflection क्या होता है। जब एंगल बनेंगे तो हमेशा दो आर्म्स होंगे, ये एक आर्म होगा, ये एक आर्म होगा। जब भी एंगल बनेगा तो दो आर्म होंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस में एक आर्म इंसिडेंट रे का होता है और एक आर्म नॉर्मल का होता है। तो देखते हैं कहाँ है इंसिडेंट रे और कहाँ है नॉर्मल। ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल। तो these two lines, these two arms will constitute angle of incidence. So let's mark it A, O, and let's take this as B. So this angle is angle of incidence. Now, Gauravang will tell me that which is angle of reflection. Sir, the angle between the normal and the reflecting ray. Reflecting ray or reflected ray? What will be the language? Reflecting or reflected? क्या होगा? Reflected ray. Very good. So I think आप कह रहे हैं AOC के बारे में, क्या ये सही है AOC? No, sir. तो फिर कौन सा होगा? BOC. Very good. BOC. So this is angle of reflection. Is it clear? Yes, sir. अब वो दो लॉ, अब हम सारे टर्म्स को समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, हम समझ चुके हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम समझ चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, हम समझ चुके हैं कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल वो लाइन होता है जो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन पे स्ट्राइक करे, किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे, और उसके साथ सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, then it is called as normal. So there are two laws. वो लॉ क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं, फिर वो लॉ कैसे वेरीफाई होंगे, कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव होंगे, ये भी जानते हैं। So the first law says angle of incidence or angle of reflection equal होगा. The first law says that angle of incidence will be equal to angle of reflection. पहले इसको वेरीफाई करेंगे, ऐसे भरोसा नहीं करेंगे। We are the students of science and we verify first and then we trust. इतना बड़ा लॉ ऐसे ही थोड़ी ना बना देंगे। ओके, और उसके बाद सेकेंड लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ये प्लेन कौन सा है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्लेन? प्लेन का मतलब तो मुझे एरोप्लेन, स्पाइस जेट, इंडिगो ये सब समझ में आता है। प्लेन का मतलब क्या होता है? Smooth surface. स्मूथ सरफेस। व्हाट अबाउट रफ सरफेस? रफ सरफेस प्लेन नहीं होगा, क्या लगता है? Sir, I don't know. Okay, if you don't know then that is a good thing for me because that is your stage. Yes Jia? A flattened surface. Simply a surface.
कोई भी सरफेस हो, अगर वो सरफेस है तो देन इट इज कॉल्ड एज अ प्लेन। फिजिक्स में प्लेन का मतलब यहाँ पे सिर्फ सरफेस है, तो ये एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। प्लेन, सेम प्लेन में लाई करने का मतलब ये होता है कि अगर लाइट, इंसिडेंट रे अगर इस सरफेस पे ट्रैवल करता हुआ आया तो वो जाएगा भी इसी सरफेस पे ट्रैवल करता हुआ, वो दूसरे किसी सरफेस पे नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऐसे होगा, रिफ्लेक्टेड रे विल बी ऑल ऑन द सेम सरफेस। ये सारे के सारे सेम सरफेस पे होंगे, एक ही सरफेस पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, नॉर्मल ऐसे आएगा, वो दूसरे सरफेस पे आ जाएगा, नॉर्मल इस तरह के सरफेस पे आ जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो दूसरे सरफेस, ये सब के सब एक ही सरफेस पे होंगे। ये सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। वेरिफिकेशन बाकी है अभी। सो लेट्स सी द वीडियो फर्दर टू वेरीफाई। Let me share my screen again. This is a bit complicated task because the laptop is as, let me see. I hope you can hear the audio. A simple Yes, sir. at work here. The angle at which the ball hits the edge is the same as the angle at which the ball bounces off the edge. So here we have kept an imaginary protector which will show that the angles are same. If you can carefully see, 90 के 10 डिग्री नीचे से इंसिडेंट रे आया और 90 के 10 डिग्री ऊपर से इंसिडेंट रे गया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? ये वाला एंगल, दिस एंगल, हाउ मेनी डिग्रीज? 20. No, 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 no. Between the normal, if this is the normal, this is the incident ray, this is the reflected ray. नॉर्मल बीचों बीच निकला है, तो बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा था? 90 और 80 के बीच में 10 degrees. ओके। अब ऊपर वाला एंगल देखते हैं हम लोग। 90 और 100 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 10. So the angle of incidence is equal to angle of reflection, yes or no? Yes, sir. Let's go further in this video. Just a minute. Does this analogy Okay, this is which ray, students? This is which ray? Incident ray. Very good. apply to the reflection of light? Let's perform an activity to verify this. The box which you are seeing over there is called as a light box. लाइट बॉक्स का यूज किया जाता है अलग अलग पैटर्न ऑफ रेस को ऑब्टेन करने के लिए। सिंगल रे चाहिए तो आप सिंगल रे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर आपको 4 पैरेलल रेस चाहिए, 3 पैरेलल रेस चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वी हैव वन मोर एड एज मिरर एंड द अदर वन इज प्लेन मिरर। सो लेट्स बिगिन आवर एक्टिविटी। We will direct light onto a mirror. It appears that the angle at which light strikes a surface and the angle at which it reflects are the same. Let's trace a diagram to verify our observation. We will draw rays to represent the light striking the surface and the light reflecting This is the from reflecting the surface. surface. Here, the ray striking the surface is called the incident ray. The ray reflecting from the surface is called the reflective ray. I hope the concept of incident ray and the reflected ray is much more clear via this animation. Yes or no? Yes. Okay, let's go for it. Next, we'll draw a line perpendicular to the Now Gia will tell me what is the name of this line. Sir, it's normal. Or is it abnormal? Normal. Okay, very good. reflecting surface at the point of incidence.
This perpendicular line is called a normal. The angle between the incident ray and the normal is called the angle of incidence. It is denoted by the small letter I. The angle between the normal and the reflected ray is called the angle of reflection. It is denoted by the small letter R. Let's measure the two angles. We can see that they are equal. So here from the normal, one is shifted 30 degree leftwards and one is shifted 30 degree rightwards. So in both the cases, we can see the angle of incidence is equal to the angle of reflection. अब सेकेंड लॉ की बात अगर करें तो ये दोनों के दोनों जो लाइट रे थे वो उसी सरफेस पे गए थे, जिस सरफेस से वो गए थे वो उसी सरफेस पे आए हैं. यानी यहाँ पे जो व्हाइट सरफेस हमने बिछाया था, ये दोनों के दोनों लाइट रे उसी सरफेस को पकड़ के भी गए और उसी सरफेस से वापस भी आए. Then that means the incident ray, reflected ray and the normal all lie on the same plane and they all meet on one single point, that is point of incident. This was the second law. Let's finish the video. Let's verify this for different angles of incidence. Now we will repeat the same experiment for other different angles. We will change the angle of the light box. हम अलग अलग एंगल पे रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हर बार वही वैल्यू आ रहा है या फिर डिफरेंट वैल्यू आ रहा है. Let's see that. 40 डिग्री के लिए भी verified, 20 डिग्री के लिए भी verified. As you can see, the angle of incidence and the angle of reflection are equal in all these cases. So we can state that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Now, let us assume that the sheet of paper represents a plane. The incident ray, the reflected ray, and the normal are all on the surface of the sheet. They all are on the same Does this plane. mean that they all lie in the same plane? Let's verify this. We will make a small change to the setup. We will So in order to verify this, we will do one simple change and let's see that. position the sheet of paper such that the normal line lies along the table edge, with half of the sheet projecting over the edge. Let's direct the beam to the mirror. We can see the incident ray as well as the reflected ray. Let's fold the paper along the edge. मैंने आगे के सरफेस को थोड़ा सा मोड़ा तो क्या सरफेस मोड़ने के वजह से वो रिफ्लेक्टेड रे नीचे गया या फिर वो उसी सरफेस पे, ओरिजिनल सरफेस पे ही ट्रैवल करता रहा जिस पे वो पहले था? प्लीज आंसर. ये पहले वाले सरफेस पे था या उसने अपना सरफेस चेंज किया? पहले वाले सरफेस पे था. Then that means कि light का incident ray, reflected ray and the incident ray will never change their surface. वो एक ही surface पे तीनों हमेशा travel करेंगे. Is it clear? Yes, sir. Okay. The folded portion of the paper now represents a different plane. The reflecting ray no longer appears on that plane. This implies that the incident ray, the normal, and the reflected ray lie in the same plane. So I hope the two laws of reflection is clear to everyone. You have understood the term, what is light, how does it travels, what is the speed of the light, and what some of the, out of the tremendous and numerous characteristics of light, we have learned a few. तो I hope कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और अगर किसी को कोई डाउट हो तो please ask me. Sir, I have a question. Yeah, please ask. Sir, if without a normal, what would be the total angle, name of the total angle of incident ray and reflected ray?
See, the total angle cannot be defined. This angle cannot be defined without the normal. बिना normal के हम लोग इसको define नहीं कर सकते हैं. The angle between incident ray and reflected ray, we can say that the angle between the incident ray and the reflected ray. But we cannot define angle of incidence and angle of reflection without the normal. Thank you, sir. Okay. Any other doubt, anyone? Okay, sir. So kindly stop recording. Okay. It was.